the English language still so widely spoken in Bharat, a colonial language, and you're so passionate that people need to start speaking in Hindi or their native languages. Maybe you can answer this in Hindi as we are right now talking in English, and it'll be nice to hear your answer in Hindi, your passion on why this needs to happen. Sure. Let me just for a few minutes put our mind to Great Britain. If you study the history of Great Britain, it's interesting because you learn so much about the British and why they did what they did in India. So in Great Britain, if you study its history, they used to speak many languages, just like in Europe. So even today, when you meet a European, even if they're German, they'll speak Spanish or they'll speak French also. So they're multilingual. So the question is, because UK had such a big influence on India, why today is the average POM not multilingual? And if you look back in their history, they learned very quickly that if you want to take over and you want to control a community, you have to remove their language. So the Scots, they could not speak their language. The Irish could not speak their language. So, the British learned very quickly that one of the best tools to subjugate or take over was to eradicate or put your language in predominance. So this is the first part of it. The second part of it, which I find fascinating, is if you look at Europe, Europe has a great connection to Latin. In fact, it's so powerful, not only was the Catholic Church, which was the church of the times, the priests only allowed to read and write in Latin, and even in early days, you could not read and write in English, you could only speak it. Latin is, even till today, the language of medicine. So somebody who studies through the medical pathway has to, if they don't understand Latin, there's a good chance they're not going to specialize and they're not going to be a great doctor. Now, when the British arrived in India, they found that there was one language that was given utmost importance, and that was Sanskrit. So what they very cleverly did was they uplifted Sanskrit and they put English in its place. And we even feel that till today. तो इसलिए मुझे बड़ा अजीब लगता है, अब मैं हिंदी में समझाएंगे आप लोगों को, कि अभी भी एक ही देश है पूरा दुनिया में जहां उसका सुप्रीम कोर्ट कोई भी उसका मातृभाषा में बातचीत नहीं होता है. मैं काय बड़ा बड़ा वकील हूं, हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट के साथ झगड़ा हो जाता है क्योंकि वो मेरे साथ अंग्रेजी कॉपरा पहन करके अंग्रेजी शराब पी करके मेरे साथ बैठना चाहता है. हम बोलते हैं, एक तो हम शराब पीने वाला नहीं है, दूसरा आपसे मिल करके कुर्ता पजामा क्यों नहीं पहन रहा है, कितना सुंदर है, कितना बोरिंग है सूट एंड टाई. तो ये चीज बड़ा अजीब चीज है. लेकिन एक और बड़ा प्रश्न होता है ना, लोग पूछते हैं कि चलो ठीक है, आपकी बात अगर सही भी है, आगे जा करके जो बच्चे लोग जो नौकरी चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए क्या उपाय है? पूरा दुनिया तो अंग्रेजी बोलता है. गलत. कितने हिंदुस्तानी जर्मनी गया है या थाईलैंड गया है या जापान गया है और उनको ये बोला गया है कि कोई बात नहीं, आप अपना भाषा बोल दो, ठीक है, अंग्रेजी. लेकिन वहां पहुंचने के बाद पता चल गया कि सब लोग जब काम नहीं कर रहा है अपना मातृभाषा में बात करता है. एक तो फिर उसके ऊपर में एक और दूसरा प्रश्न होता है ना, आजकल अगर आप कोई भी कंपनी देखेंगे दुनिया में, जो कंपनीज आगे बढ़ रहा है वो इनोवेशन के साथ बढ़ रहा है. इनोवेशन मतलब वो टेक्नोलॉजी और नया सोच, नया विचार, जिसका नया सोच, नया विचार, नया फीचर, वो आगे बढ़ता है. अगर आप कोई भी व्यक्ति को बोल देंगे कि आप जो है ना अपना मातृभाषा, जो माँ पापा आपको बचपन में जो बोला गया है, उसको बंद करो और आपको अंग्रेजी में सोच विचार करना है, तो आपको पीछे रखेगा. अभी चाइना और भारत दोनों का जगना का समय आ गया और इतना लोग है भारत में, अगर वो अपना मातृभाषा में सोच विचार करेगा, एप्लीकेशन बनाएगा ना, तो बाकी दुनिया में कितना अच्छा बात है. ये मुझे बड़ा अजीब लगता है कि हमेशा हमको झगड़ा होना पड़ता है. और अंग्रेज इतना चालाक है ना, वो बोला हाँ ना, अंग्रेजी जो है ना लिंक लैंग्वेज है हिंदुस्तान में. क्यों, क्या जरूरत है? अगर आप तमिल है तो आपको मलयालम आता होगा,
अगर आप तेलुगु है तो तमिल आता है, आप मराठी है तो हिंदी आता है, गुजराती भी हिंदी आता है, तो मल्टीलिंगुअल रहने में क्या आपको नुकसान है? और जब सारा दुनिया में सबसे ज़्यादा मैंdarin बोलता है, उसके बाद हिंदी, जो समझ जाता है, उसका मातृभाषा नहीं है, उसके बाद अंग्रेजी। तो क्यों हिंदी को इतना मतलब ये लोग को दबाना है, उसको पुश करना है, उसको खत्म करना है? बड़ा अजीब बात है ना? तो आप देखिए, एक और भाषा है जो 4th जो 14 जो आता है ना, वो म्यूज़िक में, वो नंबर 1 है दुनिया में, वो कौन है? स्पेनिश। तो ये थोड़ी है कि खाली अंग्रेजी बोलने से नौकरी मिलेगा। एक छोटी-सी कहानी बतलाते हैं आपको। हमारा एक दोस्त था दिल्ली में, वो एक जर्मन कार मैन्युफैक्चरर का कंपनी में काम किया था दिल्ली में, और उसका मालिक, सबसे बड़ा मालिक आया था जर्मनी से, तो उसको काम दिया था गाड़ी में बैठ करके उसको दिल्ली में घुमाओ। उनको बड़ा अजीब लगा कि उसका मालिक अंग्रेजी ठीक से नहीं आता था। तो अंत में उनसे पूछा कि सर यू कांट स्पीक इंग्लिश प्रॉपर्ली, व्हाट हैपेंड टू यू? तो वो अंग्रेजी में उसको जवाब दे दिया, शुड आई बीन अ गुड इंजीनियर एंड रन माय कंपनी, और शुड आई लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज? तो ठीक है, अंग्रेजी अच्छा मेरा मातृभाषा है, मुझे भी प्रेम है अंग्रेजी का, लेकिन जो आपका मातृभाषा है, उसमें आप में दम है, शक्ति है, उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं आपके जीवन में। और ये मेरा सिर्फ बात नहीं है, गूगल को लोग जानता है, एप्पल को लोग जानता है ना, इसलिए ये सब अपना एप्लीकेशंस को मल्टीलिंगुअल बना दिया ना। जब बाकी क्योंकि मैं बहुत टोपी पहना है, हिंदुस्तान में भी स्टार्टअप्स में भी काम किया, और मुझे भी अपना सीईओ के साथ झगड़ा हो गया। वो बोला है सबको अंग्रेजी बोलना है। मैंने बोला ये दिमाग खराब कर रहा है, ये अंग्रेजी बोलना है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा प्रश्न पूछ लीजिए। I was just thinking, it's so true what you just said. I understood you. I'm sorry, I can't, my Hindi isn't yet not so great to respond. But I'm an educator, and what I always feel is children. They feel sometimes like they can be extremely intelligent. Just say that they're brilliant in science, brilliant in other things, but if they don't know English, and this happens also here in the UK, where there's if they've come from another country, or then you're deemed to feel unintelligent, right? Just because you don't know English, and this happens in Bharat. So you can be brilliant in every subject, but if you don't know how to speak, learn that, or have the medium of English, you're considered as not knowing. So this is something which I observed in Bharat, and I also feel for the children who sometimes find it difficult to learn because they don't know English, although they can be extremely bright, right? I'm also so passionate over this. It's so important to take this message out. So beautifully said. Well, let me talk about another colony, Yeah, Australia. After all, we were also started, they came here, knocked off all the local indigenous people and put a whole lot of convicts and other people. So in Australia, we also had this misunderstanding up until about 30 years ago that everybody should just speak English. And when the first wave of migrants started coming to Australia, we made it push them to learn English, but we also made sure that their children who were born here only spoke English. And then we started to observe that these children, even though they were very bright, were having problems because if they go back to their home country to meet their grandparents, or Australia as a nation would try to connect with the rest of Southeast Asia, we were limited very much because we were not multilingual and we could only speak English. So this became a hindrance. So Australia started something called the Colombo Plan, which is absolutely amazing. And I love to pinpoint this because I hit the Ministry of External Affairs hard on this issue. The Colombo Plan, what they do is 160 of the brightest young students from all over the universities in Australia are chosen. And then they are given a scholarship, which is worth of something to the tune of $70,000. They don't get in the pocket, but it's the cost.
This scholarship allows them for 1 year during their university bachelor's degree to go to a country in Southeast Asia and spend 6 months to learn their language there and 6 months to get work experience in that country, right? Because we understand that unless our younger citizens can speak Korean, Japanese, Thai, Indonesian, we will not adjust and we will not progress in the future in Southeast Asia. But then there comes the question, one would obviously think, and Australia would obviously think, that let's say Hindi, because it's such a big language in India, that people would be enrolling to go for Hindi. But this is where it gets comical. Diplomats, and I'm just going to digress for a moment, diplomats are people who are very bright academically. And to become a diplomat of any country, you have to be incredibly bright. And normally you learn a second language. Every diplomat knows that when they get a posting in a new country, so if an Indian goes to France or a German comes to Australia, you learn that language or you start learning that language, right? And this is normal everywhere in the world, except for one capital. And can we guess which capital of the world that is? New Delhi. What happens when a diplomat arrives in New Delhi and tries to learn Hindi? What are they told by the local officials, the Ministry of External Affairs? No need, we speak English. ये क्या दिमाग है दिल्ली का? लेकिन इसमें अब नया बात जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मैं उसको याद दिलाना चाहता है, थोड़ा चिकी बात है, प्रधानमंत्री और जो गृह मंत्री है ना, दिल्ली में रह करके अपना मातृभाषा गुजराती है, लेकिन हिंदी बोलता है. जो मुख्यमंत्री है दिल्ली का और उनका जो नंबर 2 मंत्री है ना फाइनेंस और एजुकेशन का, वो भी हिंदी बोलता है. लेकिन एक और पुराना पार्टी जो है ना, उनसे हम जब भी मिलता है और उन लोग से मिलता है, वो सब अंग्रेजी में बात करता है. तो कांग्रेस से मेरा प्रार्थना है कि आप अंग्रेजी छोड़ो. थोड़ा थोड़ा हिंदी में बात करना शुरू करो दिल्ली में. नहीं तो दोनों मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री उन लोग के साथ आप कभी नहीं जीत पाएगा. Absolutely. Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links, more content, and to support our work, please visit citti.net. Dhanyavad. Namaskar.